Okay, hello guys. It is exactly 6:40 on the clock and I'm here live for you all. As मैंने आप सभी लोगों से कल कहा था कि मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगी. एग्ज़ाम बहुत ही जल्द होने वाला है, यानी कि 5 तारीख को ही आप सभी लोगों का एग्ज़ाम है. So as I know and considering the fact कि एग्ज़ाम just around the corner, और हम लोगों को बहुत जल्दी जल्दी मिल लेना चाहिए ताकि आप लोग की भी तैयारी फटाफट से करवाई जा सके. मैंने आज ही आप सभी लोगों के लिए एक फटाक से लाइव स्केड्यूल कर लिया है. इन केस यू आर लिसनिंग टू मी, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके हाय हेलो कुछ एक पिंक कर देना ताकि मुझे पता चल जाए कि आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच पा रही है. एंड मुझे अच्छा लगेगा यार, आप लोग जब चैट करते हो तो बढ़िया ही लगता है. और जैसा कि आप देख भी सकते हो मेरे थंबनेल से आपको पता चल चुका होगा कि आज का जो भी सेशन होने वाला है, वो सेशन बेसिकली इज एन एक्सटेंशन एंड कंटिन्यूएशन ऑफ येस्टरडेज लेक्चर, यानी कि लेक्चर 1 का ही कंटिन्यूएशन है. जहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं कि जो भी रिमेनिंग पोर्शन है जिसके अंदर आते हैं आपकी कॉग्निटिव थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक एक्सटेंशन थेरेपी, बायोमेडिकल तो आ नहीं रहा है इस बारी, तो मैं अभी इस बारी नहीं कराने वाली हूँ. और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू या ये जितने भी पॉइंट्स बचे हुए हैं वो मैं आज की अपनी इस क्लास में ख़त्म कराऊंगी. और होपफुली मुझे ऐसा लगता है कि मैं आज ही पूरा चैप्टर माइंड अप कर लूँगी, ये मुझे लग रहा है. बट कुछ कह नहीं सकते हैं फिर भी. सेशन में आगे बढ़ने से पहले कुछ है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो आप फटाफट से पूछ लो ताकि आपके सवाल का जवाब दे के मैं आगे बढ़ जाऊँ. ठीक है? ओके. सो मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ सो दैट आप लोगों को पता चल जाए कि अभी चल रही है पढ़ाई. कॉग्निटिव थेरेपी, करेक्ट. सो एज यू कैन सी कॉग्निटिव थेरेपी. तो जब भी हम कॉग्निटिव थेरेपी की बात करते हैं गाइस, इसकी अजम्पशन ये थी कि जो प्रॉब्लम है इंसान के अंदर दैट अकर्स बिकॉज ऑफ फॉल्टी कॉग्निशन, यानी कि हमारे जो फॉल्टी थॉट पैटर्न्स हैं उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है. Shashank is here. He's saying I'm facing a lot of problem in post-Freudian approaches and humanistic approaches. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तो मैं आज की क्लास में कराने ही वाली हूँ शशांक. और जो फ्रॉइडियन पोस्ट फ्रॉइडियन अप्रोचेस हैं वो ऑलरेडी मैंने अपने पिछले लाइव में कवर कर लिया है. तो तुम चैप्टर 4 का लाइव चेक कर लो, उसमें तुम्हें मिल जाएगा तो तुम वहां से कर सकते हो. ठीक है? सो ह्यूमनिस्टिक विल रिमेन द सेम जो मैं आज की क्लास में कवर करूंगी. सो दैट्स गोना हेल्प यू, डोंट वरी. ओके. सो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट जो थे वो ये बिलीव करते थे कि प्रॉब्लम अकर्स because we have certain irrational beliefs, okay, irrational thought patterns, और हम उन problems को solve कर सकते हैं by reversing those irrational thought process to the rational ones. अब कौन कौन से irrational thoughts होते हैं? irrational thoughts ऐसे माने जाते थे कि I should be loved by everyone, which if you technically see तो ये possible नहीं होता है that one should be loved by everyone around them. ठीक है? तो ये एक irrational thought है, इसको rationalize करना बहुत जरूरी है. और कॉग्निटिव थेरेपिस्ट ये कहते थे जब आप इसको रिप्लेस कर लोगे रैशनल थॉट से तो आपकी जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएगी. सो दिस वाज the assumption, the broader assumption of cognitive therapy. Now जब भी हम cognitive therapy की बात करते हैं from your chapter 5's point of view, दो लोगों का नाम बहुत ही commonly and extensively इस्तेमाल किया जाता है जो कि है एरन बेक और सेकंड है दिस गाय एल्बर्ट एलिस. ठीक है? सो इन दो लोगों की जो थ्योरीज है उनको हम बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं. सो एल्बर्ट एलिस ने हमें जो थ्योरी दी थी उसका नाम था रैशनल इमोटिव थेरेपी. Okay, so first of all we will be doing rational emotive therapy. I have Khushi who joined me. Hi Khushi, I hope you're doing well dear. So as I said कि first one is the rational emotive therapy. Now rational emotive therapy stated कि as I said कि कुछ irrational beliefs होते हैं, okay, जिनको change करना पड़ता है and convert करना पड़ता है rational ones में. Now
इसके लिए 3 स्टेप्स का इस्तेमाल किया जाता है या 3 स्टेप्स होते हैं बिटवीन द एंटीसीडेंट इवेंट एंड द कॉन्सिक्वेंसेस दे सेड। उसके लिए उन्होंने कहा कि इसके जो 3 स्टेप हैं वो है एंटीसीडेंट इवेंट, बिलीव्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस, जिसको उन्होंने ए बी सी में सेग्रीगेट किया। नाउ गाइस ये जो ए बी सी है आपको एटीट्यूड में भी मिलेगा और आपको कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर आरईटी में भी मिलेगा। सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपको इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो है काफी अच्छे से पता होना चाहिए, यानी कि शुड नॉट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द एबीसी ऑफ एटीट्यूड and ABC of cognitive therapy. These are certain common mistakes which children tend to make. This is the reason I'm telling you. अब इसमें ए आता है एंटीसीडेंट इवेंट, यानी कि कौन सा ऐसा इवेंट था जिसकी वजह से प्रॉब्लम ट्रिगर हुई या वो इरेशनल थॉट ट्रिगर हुआ, कौन सा ऐसा इवेंट था। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि मैं रोड क्रॉस कर रही थी, मैंने अपने दोस्त को आवाज लगाई, वो जो कि रोड की दूसरी तरफ खड़ा था, मैंने उसे हाय हाय करके चिल्लाया, हेलो हेलो किया, एंड ही डिड नॉट लिसन एंड रादर ही जस्ट वॉकड ऑफ। तो ये बन जाता है एक एंटीसीडेंट इवेंट जिसकी वजह से मेरे कुछ बिलीव जनरेट होंगे that probably nobody likes me, nobody wants to interact with me, nobody wants to be friends with me. तो मेरा एक ओवर जनरलाइज्ड इरैशनल बिलीफ जनरेट होगा बिकॉज ऑफ दिस एंटीसीडेंट इवेंट, जिसके कॉन्सिक्वेंस होंगे दैट आई विल हैव इमोशनल डिस्टर्बेंस, I will feel lonely, I will feel helpless, I will feel all of those negative emotions. So ये है A, B and C of RET guys, ठीक है। जब आप इसको यहाँ पे पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू सी दैट। नाउ ये जो प्रॉब्लम है आरईटी की मतलब कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर कैसे रिजॉल्व की जाती है। सो जो कॉग्निटिव थेरेपिस्ट हैं वो बिलीव करते हैं कि हम इरेशनल बिलीव्स को काउंटर क्वेश्चन करके रैशनल बिलीव्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू यू थिंक कि एक इंसान को एक पूरी जिंदगी में जिससे वो मिलता है उसको हर इंसान पसंद आता है? डू यू रियली थिंक सो? सो दिस इज वन वे ऑफ काउंटर क्वेश्चनिंग and it is one way of doing a non-directive questioning. You're not telling me, are you crazy? Nobody, it's not technically possible कि दुनिया में आप जिससे मिलो आप सब आपसे प्यार करें, you know. So you're not doing directive questioning, you're doing non-directive questionings. You're just probing the thought, you're just making sure the person is actually getting into the thought process, introspect। and इसी तरीके से उसके जो इरेशनल थॉट्स हैं उसको सेल्फ रियलाइजेशन करवा करके रैशनल थॉट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। ये था RET बाय एल्बर्ट एलिस। नाउ वी हैव सेकंड कॉग्निटिव थेरेपी व्हिच वाज गिवन बाय एरन बेक। अभी तक किसी को कोई सवाल तो मुझे जल्दी से लिख डालें। एरन बेक ने कहा कि बचपन में आपके कुछ कोर स्कीमास डेवलप होते हैं ड्यू टू योर इंटरेक्शन इन द सोसाइटी, ठीक है, और वो कोर स्कीमास बड़े होते होते इंसान के अंदर इरेशनल थॉट्स को बना देते हैं, डेवलप कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका बहुत ही अब्यूजिव चाइल्डहुड रहा है, यानी कि माँ बाप बड़ा मारपीट करते थे, या यू नो डिस्टर्ब फैमिली रही है, यानी कि यू नो पेरेंट्स हैव हैड लॉट ऑफ क्वारल्स, या इन सिंगल पेरेंट रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसकी वजह से ये चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस की वजह से एक कोर स्कीमा इंसान के अंदर डेवलप हो जाता है। मे बी दैट यू नो आई एम नॉट वांटेड, मे बी नोबडी लव्स मी, मे बी यू नो व्हाटएवर, या टीचर ने जब मारा हो, तो कुछ एक डेवलप कोर स्कीमा हो जाता है जिसकी वजह से वो इंसान के लॉन्ग टर्म में थॉट्स को इफेक्ट करता है और उनको इरेशनल बना देता है, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट योर कॉग्निटिव थेरेपी गिवन बाय एरन बेक। Okay, so the cognitive distortions are ways of thinking which are general in nature but which distort the reality in a negative manner. These patterns are called dysfunctional cognitive structures. So the distorted reality are called dysfunctional cognitive structure. Hi Muskan, I'm so glad that you're attending the class today. You've been requesting for it, so good to see you. No problem at all. Good evening dear. Okay, so on that note, you must know the full form of DCS, dysfunctional cognitive unit, और एक fill in the blanks format में इसको जरूर कर लेना कि वो बोलेंगे कि ये एक or maybe you know they'll just quote a line of dysfunctional cognitive structure and they would ask you what exactly is this. Okay, so
that's something that you must do. So the repeated occurrence of these thoughts lead to the development of a feeling of anxiety and depression. As I said, it leads to negative feelings, negative emotions, and affects the person's mental health in long run. Okay, and again, this can be handled through counter questioning, through through constant dealing, constant consultation, and everything. All right. So you give therapy to the person. Then comes the most relevant therapy in the cognitive, which is called the cognitive behavioral therapy. Guys, I'm not literally reading out every line for you all. Neither I'm doing every paragraph for you all. मैं एक बहुत generic revision करा रही हूँ so that you're also making sure कि आप इन portions को पढ़ चुके हैं. ठीक है? So this is how I'm doing the revision for you all. It's not a detailed discussion of the chapter. Let me be very clear with you all. Right? So next is the CBT. CBT, guys, is one of the most relevant and one of the most useful therapy in cognitive therapy. ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि what do you think or what do you use the most relevant therapy, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि CBT लिखो, बट मैं ये सजेस्ट जरूर करूंगी कि ऐसी थेरेपी लिखना जिसके ऊपर आपकी बेस्ट कमांड हो एंड दैट applies to all the question. अगर कोई ऐसा open ended question आ जाता है तो आपको वही particular answer लिखना है जिसके अंदर you feel the most comfortable. Okay, ऐसा नहीं होना चाहिए कि halfway through जाकर के you feel कि अरे यार I don't know how to go about it, कैसे करूँ, ये करूँ, वो करूँ. So you have to be mentally very very sure कि आपके 15 मिनट जो आपको reading time मिल रहा है उसको आप best utilize कर रहे हैं. ठीक है. Now CBT, as the name suggests, cognitive behavioral therapy, which means कि इसके अंदर मैं cognitive therapy भी इस्तेमाल करूंगी, मैं behavioral therapy भी इस्तेमाल करूंगी. Okay, cognitive यानी कि where I am manipulating certain irrational thoughts and converting them into the rational ones. Behavioral therapy where I'm utilizing the appropriate behavioral techniques so that इंसान के अंदर वो changes अगर आते हैं, let's say I want the person to actually think that it is not logically possible कि दुनिया में आपको हर कोई प्यार करे. ठीक है, जब वो ये समझने लगता है तो मे बी आई एम रिवॉर्डिंग दैट पर्सन. रिवॉर्ड कैसे कर रही हूँ? आई एम जस्ट गिविंग अ maybe a chocolate to that person, or maybe मैं उसको एक गिफ्ट प्रॉब्ली दे रही हूँ. सो इसके थ्रू क्या कर रही हूँ, मैं बिहेवियरल टेक्निक्स की एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रही हूँ. सो दिस इज व्हाट वी डू इन CBT. वी यूज द एप्लीकेशंस ऑफ बोथ कॉग्निटिव एज वेल एज बिहेवियरल थेरेपी. ये किन किन प्रॉब्लम्स को ट्रीट करता है? यू नो दैट दे आर वेरी CBT इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल एंजाइटी इश्यूज, all phobic issues, all somatic issues. So in सभी issues के लिए in CBT is one of the best used therapy. ठीक है. Right. So second paragraph onwards, the rationale is that the client distress has its origin in the biological, psychological and social realms. ठीक है. सो ये कहता है कि इंसान की जो प्रॉब्लम है वो 3 एरियाज में फाउंड पाई जाती है कि बायोलॉजिकली कुछ एक प्रॉब्लम है यानी कि जेनेटिक कंपोनेंट्स में इश्यूज हैं, साइकोलॉजिकली क्योंकि वो चीज़ों को समझ ठीक से नहीं रहा है, एंड सोशली यानी कि उसकी जो सराउंडिंग है दैट्स हैम्पर्ड. सो हेंस CBT believed कि the treatment is also required in all 3 realms. Okay, so addressing the biological aspect through relaxation procedure, यानी कि मैं अपने पेशेंट को एक रिलैक्सेशन प्रोसीजर के अंदर इंडल्ज कराऊंगी. इससे मैं क्या कर रही हूँ, इससे मैं उसके बायोलॉजिकल प्रीडिस्पोजिशंस को हैंडल कर रही हूँ. ओके, द साइकोलॉजिकल वंस थ्रू द बिहेवियरल थेरेपी. Okay, so let's say the person is constantly feeling jittery, anxious, this that, तो मैं उसको cognitive as well as behavioral techniques का इस्तेमाल करूँगी. यानी कि counter questioning कर लिया, open ended questions कर लिए, जब response अच्छा मिला तो उसको reward and encourage कर दिया, and social ones with the environmental manipulation. So for example, अगर distorted family है या disturbed family है या single parenting है, तो maybe calling parents also for the therapy, maybe teaching the parents to do the or indulge in the art of co-parenting. They don't have to be husband and wife, but then they can co-parent a child. Okay, so these manipulations will be required, and this is all what we do in CBT.
I hope so far we are doing good. In case any question, please shoot it. Ansh has joined. He's saying, "Ma'am, chapter 2 is confusing. Psychology." Ansh, I would eventually be taking it up, but certainly आज का जो topic है वो chapter 5 ही रहेगा. As there are many research names in the chapter. So what do you do, Ansh? इसकी एक फ्लो चार्ट बनाओ. फ्लो चार्ट में एक साइड रिसर्चर्स के नाम लिखो, एक साइड उन्होंने क्या किया उसके नाम लिखो, और इसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में याद करने की कोशिश करो. एंड लेटर ऑन मे बी यू कैन रिक्वेस्ट समबडी एट योर होम, मम्मी या भाई या पेरेंट्स या सिस्टर या व्हाटएवर हूएवर इज देयर एट योर होम, कि या तो दे कैन आस्क यू और या दे कैन जस्ट प्रिपेयर अ रैंडम मिक्स एंड मैच का. सो दैट वे you can indulge more people, you can engage and you can learn. So जहाँ चाह है वहाँ राह है. आपकी पढ़ाई रुक नहीं सकती अगर आप चाहें कि आप पढ़ना चाहते हैं. So on that note, guys, your cognitive therapy is over. The next one that we have in list is the humanistic extension therapy. So मैं इसका क्रक बता देती हूँ फटाफट से. ये सबसे easiest है. I will be doing that, Muskan. I will be doing that. Correct. That's a very good suggestion. I think I'll make a video on that. मैं एक कोशिश करूँगी कि इसके ऊपर वीडियो बना सकूँ. 1 mark, 2 mark, 3 mark, 4 mark के क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट कर सकते हैं. सो गुड सजेशन. थैंक यू सो मच. ओके, तो मैं पहले आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि ह्यूमनिस्टिक एक्सटेंशन की एक बेसिक अप्रोच क्या थी या बेसिक असम्पशन क्या थी. ठीक है. नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस वन थिंग स्ट्रेट इन योर हेड कि ह्यूमनिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल दो अलग अप्रोचेस हैं, अलग थेरेपीज हैं. बट for you all in your class 12, you read it under the same umbrella. Okay, you do not clearly segregate them into two bits, but हाँ कहीं जगह पे differentiation दिया गया है. तो आपको ये समझना है कि ह्यूमनिस्टिक अलग है, एग्जिस्टेंशियल अलग है, और उन दोनों को मिक्स नहीं करना है. ठीक है. नाउ ह्यूमनिस्टिक की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर दो लोगों का नाम बहुत ही एक्टिवली लिया जाता है, जो कि है इब्राहिम मैस्लो और इब्राहिम मैस्लो और एक और क्या था, अरे यार आई कॉन्स्टेंटली ऑलवेज फॉरगेट हिज नेम. इब्राहिम मैस्लो एंड कार्ल रॉजर, सॉरी, यस. ठीक है. सो ये दो लोग जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है और इनका कंट्रीब्यूशन ही हम मेजरली बात करते हैं. नाउ इनका अजम्पशन क्या था? दे बेसिकली सेट कि जो इंसान है दे आर वेरी पॉजिटिव, दे आर वेरी प्रोग्रेसिव and they have a goal directed behavior. मतलब basically humans are thriving for self growth. Okay. Now in the process of this self growth, इंसान deviate हो जाता है because of the environmental influence, but they are born with the instinct of self growth. So इनका जो इंसानों को लेके पर्सपेक्टिव था वो बहुत ही पॉजिटिव था. Hence ह्यूमनिस्टिक उसका नाम भी पड़ गया, बट दैट्स नॉट समथिंग यू नीड टू एम्फसाइज अपॉन. इसके अंदर जो चीजें आपको पढ़नी है वो है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. दीज आर सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स व्हिच यू नीड टू कीप इन माइंड. सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कॉन्सेप्ट is a universal concept. जब भी हम self actualization की बात करेंगे, whether we are doing it in chapter 2, we are doing in 4, 5, 7, 8, whatever it is, class 11, 12, उसका मतलब सेम ही रहेगा. तो मैं आप सभी लोगों को बता देती हूँ कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मतलब है when you achieve your fullest potential, it is assumed that you are self actualized. Okay. फॉर एग्जाम्पल आज आप सभी लोग पढ़ाई कर रहे हैं क्लास 12 के बोर्ड के एग्जाम के लिए. when you feel that your potential is to achieve 90, for some others you feel 95, the others feel 98. Okay, so the day your result will get declared and you achieve that expected percentage, that day is going to be the day when you will be self actualized, when you will match your expectation. ठीक है. सो दैट्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. नाउ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है गाइस, ये बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है एंड डायनामिक कॉन्सेप्ट है. ओके. व्हाई डू आई कॉल इट डायनामिक? क्योंकि जस्ट इमेजिन 12th के बोर्ड का रिजल्ट आया, उस दिन तुम सेल्फ एक्चुअलाइज महसूस कर गए, बट इज दैट ऑल? विल यू नॉट हैव फर्दर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योरसेल्फ कि मैं ऐसे कॉलेज में एडमिशन लूं या मैं ये करूं या मैं वो करूं? सो हेंस
It is a very dynamic process. We are always in the process of achieving or striving our self-actualization throughout mostly in our life. Okay, I hope that's clear to you all. Please do write it to me in case there's any confusion. Uh, Apart from that, these guys spoke about over here is the ideal self and real self. Okay, बट मेजरली सब एम्फोसिस सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को लेकर ही था. सो बेसिकली जब भी हम सेल्फ एक्चुअलाइजेशन अचीव नहीं कर पाते हैं या डिले हो जाता है या कोई हर्डल्स हैं, देन इट लीड्स टू some kind of a psychological issues or problems in an individual. Okay. Yeah. So it says this curve leads to destructive behavior and negative emotions by thwarting the process of emotional integration. Therefore, the therapy creates a permissive and non-judgmental and accepting atmosphere in which the client's action can be freely expressed and and the complexity, balance, and integration to be achieved. So इसके अंदर जो treatment दिया जाता है वो they believe कि you need to accept the client the way they are, and eventually they will go deep in within themselves and they will be able to come up with a solution to their own problems. So ये इसका एक basic assumption है. चलो, on that note, एग्जिस्टेंशियल थेरेपी पे आते हैं. नाउ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी की जब हम बात करते हैं तो विक्टर फ्रैंकल की बात आ जाती है. ठीक है. नाउ एग्जिस्टेंशियल थेरेपी एज आई सेड गाइस अलग है, ह्यूमनिस्टिक अलग है, तो दो अलग अलग सवाल भी बनते हैं. लोगोथेरेपी, आई एम श्योर आप सभी लोगों को बाय नाउ समझ आ ही चुका है कि लोगोथेरेपी क्या होता है, उस कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये वो सब कुछ पता है. सो यही है द पॉइंट wherein you feel that you don't know what you're here for, what is the reason of your existence. What is the reason of your existence and everything. It creates existential anxiety in an individual, and Frankl emphasized the role of a spiritual anxiety that leads to meaninglessness, and it may called so this is what it is basically. In logotherapy, the therapist is open to share their feeling, values, their own existence with the client, and the emphasis is here and now. The transference is actually actively discouraged. Now, what do we mean by transference? I'll speak of that first. गाइस, ट्रांसफरेंस फ्रॉइड की थ्योरी में दिया गया था. सिंस तुम लोग फ्रॉइड चैप्टर 2 में स्किप कर जा रहे हो तो मैं बता देती हूँ. ट्रांसफरेंस का मतलब है when the client develops the feeling of or starts to identify with the therapist with some kind of a power figure from their past. Okay, so it could be ki So it could be कि client would start to feel कि therapist उसका parent है, और client would start to feel कि therapist उसका कोई lover है. So they basically start to identify. In existential therapy, since it speaks about a lot of spiritualism, it speaks about identifying yourself, identifying the purpose of your life and everything. So they actively discourage this one particular process. They do not believe in transference at all. ठीक है. गजाला गजाला is saying, मैम ये क्लास कितने बजे से डेली चलती है? वैसे तो 6:40 आई हैव बीन डूइंग फॉर लास्ट 2 days, बट कल का स्केड्यूल मैं अभी सोचा नहीं है बिकॉज आई हैव अ रियली यंग बेबी, एज यू कुड हियर ही वाज जस्ट क्राइंग. तो so he it's not her, it's he. So as he's crying now, तो वो अभी he's gone back to sleep. मतलब his father is taking care. यार अभी तो बुलाया नहीं मैंने उसे, इधर आ गया. You wanna come here? Wanna see what mama is doing? No. Ta-da. So yeah, so this is what it is guys कि लोगोथेरेपी के अंदर ट्रांसफरेंस को एक्टिवली डिस्करेज किया जाता है. They do not want transference to occur. Okay, I have a question.
वंश वालिया इज आस्किंग मैम 10 दिन में साइकोलॉजी हो जाएगी ना? अभी 10 दिन तो वेस्ट कर दिए। बहुत ही इजीली हो जाएगी। अगर तुम 10 दिन रज के पढ़ाई करोगे ना तो कोई नहीं रोक सकता है बॉस। बहुत ही इजीली हो जाएगी, बहुत अच्छे से होगी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी अगेन गाइस, ये ह्यूमनिस्टिक थेरेपी का पार्ट है। ओके, client centered therapy was basically focused about the client, and they actually spoke over the fact that we need to accept the client the way they are. We need to give a non-judgmental acceptance to the client, and eventually again they will be able to introspect and they'll be able to understand कि क्या है क्या नहीं है, उनका क्या problem है, and this was about client centered therapy. So वही, see, as you can see, unconditional positive regard, empathy, यही सब है इसके अंदर. So you'll read through, you'll get to understand. Gestalt therapist, या gestalt therapy again, ये ना humanistic का part है, ना existential का part है. This is a separate therapy altogether. So this is a little bit confusing for most of the children. That's why I'm explaining this. Um, Okay. So gestalt कुछ नहीं, they believe again in self awareness. They believe कि इंसान के अंदर जो problem है आपको उसको aware करवाना पड़ेगा, and eventually they will have an acceptance, and they'll be able to cure their own selves eventually. Now biomedical तो आप लोगों का आ नहीं रहा है, correct? Factors contributing healing आ नहीं रहा है. Ethics आ रहा है? Tell me somebody if ethics is coming. Um, 640 डेली मैम, यार कोशिश यही है, बाकी देखते हैं. मोस्ट वेलकम. ओह गुड, बिकॉज आई हैव गॉट टू नो अबाउट हिम फ्रॉम योर प्रीवियस लाइफ. ओके, ऑलराइट, या ही इज माय little one. He just turned one couple of weeks ago. So really young one, but yeah. चलो, somebody tell me if ethics is coming. Alternative therapy तो आ रहा है. एथिक्स आ रहा है क्या? मुझे कोई बताएगा? इट इज कमेंट में लिखकर बताओ इफ एथिक्स इज कमिंग. एथिक्स नहीं भी आ रहा है तब भी बता देती हूँ, बहुत जेनरिक है. जब भी मैं एथिक्स की बात करते हैं तो ओके, इट्स कमिंग. थैंक यू मुस्कान. तो एथिक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर इन्फॉर्म कंसेंट, यानी कि आपको अपने क्लाइंट से बताना है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, उनको उस कॉन्फिडेंशियलिटी का वादा करना है कि हम जो भी चीज़ करेंगे उसको वी विल नॉट ब्रेक द रूल्स, द नॉर्म्स एंड एवरीथिंग. देन okay, and then elevating personal distress suffering should be the goal. So you need to make sure कि आप अपनी थेरेपी के थ्रू जो भी कर रहे हैं उसमें आपका जो क्लाइंट है वो बेहतर महसूस करे, बेहतर एक्सपीरियंस करे. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आफ्टर द थेरेपी वो और डिटोरिएट कर जाए. इंटेग्रिटी मेंटेन करनी है. ऐसा नहीं है कि लव अफेयर पे चले गए जी, लफड़े चल रहे हैं थेरेपिस्ट और क्लाइंट के. सो दैट्स समथिंग that you need to maintain the integrity of practitioner and client relationship, respect the human rights, and also professional competence and skills are very very essential. Some people, they send me a lot of insta inbox and they tell me कि मैम हमने ग्रेजुएशन इसमें की है, मास्टर्स इसमें की है, क्या हम एक डिप्लोमा करके थेरेपिस्ट बन सकते हैं? सो गाइस, दिस इज समथिंग, you know you are not up to the mark in terms of professional competence, and you want to make money or do whatever, so that's something which is not encouraged. So please please please, that's समथिंग, ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं शेयर करना चाहती हूँ. बट प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. पढ़ाई लिखाई करने के बाद भी यू नीड टू प्रैक्टिस अंडर समबडी, एंड दैट्स व्हेन यू नीड टू एक्चुअली स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इंडिविजुअली. यार अच्छा, अगर ये सब कुछ आ रहा है ना, सो व्हाट आई विल डू इज कि फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग, क्योंकि ये मैं अच्छे से बताना चाहती हूँ, ये जो पॉइंट्स है ना, आई वांट टू डिस्कस देम नाइसली. एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपीज, रिहैबिलिटेशन, एंड देन द क्वेश्चन आंसर. सो लेट्स डू वन मोर सेशन टुमारो. ठीक है, 3 सेशन कर लेते हैं. 1 लेक्चर, मतलब 1 चैप्टर के 3 लेक्चर्स प्रिपेयर कर लेते हैं. लेक्चर 1 कल हुआ है, लेक्चर 2 आज हो गया है, एंड लेक्चर 3 मैं कल करती हूँ. ठीक है, जिसके अंदर मैं रिमेनिंग चैप्टर एंड ऑल्सो द क्वेश्चन आंसर्स आई विल डिस्कस. व्हाट से दैट मीन्स, आई विल ऑल्सो नॉट बी इन हरी.
और आज का भी 30 मिनट्स का सेशन ऑलरेडी हो गया है, क्योंकि ये 30 मिनट से ज़्यादा एक्सटेंड करते हैं ना, तो बाद में लोग जो लाइव देखते हैं वो इतना ज़्यादा वो नहीं कर पाते, इसको जॉइन नहीं कर पाते हैं ठीक से, ठीक है। सो माय सजेशन वुड बी कि मैं इसमें लेक्चर 3 प्रिपेयर कर लेती हूँ, which is going to be the remaining all the portions which is left, and this thing, the question answers of the chapter. So we'll catch up tomorrow, most probably at the same time. अगर कुछ टाइम ऊपर नीचे होता है तो मैं जैसा आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखती हूँ कि बेल आइकन दबा के रखो, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिल जाए मैं जब भी लाइव जाऊंगी। इन केस पहले हो रहा है बाद में हो रहा है तो बेल आइकन से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी, तो आप ज्वाइन कर पाओगे ऑन टाइम, ठीक है, अदरवाइज स्किप हो जाएगा। So do that. So Anushka is saying, "Ma'am, can we please cover all the chapters? It'll be very helpful." I'll try, Anushka. I'll try. I'm trying, and I think hopefully in the coming time और ज़्यादा कोशिश करेंगे, जैसे जैसे एग्जाम क्लोज आते जाएंगे, हम जितना ज़्यादा कंटेंट जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ही करने की कोशिश करेंगे यार। मैम क्या 7 PM पे स्टार्ट कर सकते हैं डेली? आई कांट रियली से दैट, बिकॉज एज यू कैन सी इतना छोटा बच्चा है ना, मेरा खुद का टाइम का ठिकाना नहीं रहता है। नोट्स बनाने का टाइम नहीं है बॉस। एनसीईआरटी की बुक उठाओ, उसमें से पढ़ना शुरू करो, उसी से पढ़ के तुम अव्वल नंबर ला सकते हो। ओके, यू डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा टेक्स्ट बुक, दिस इज माय फंडा। मैं जितने बच्चों को पढ़ाती हूँ ना, मेरा फंडा ये रहता है कि आपको एक्स्ट्रा हेल्प बुक चाहिए ओनली टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ओनली टू प्रैक्टिस वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस कि क्या हो सकते हैं। बट अगर आपको एक्सेल करना है देन इट्स जस्ट द बुक दैट यू नीड, यू डोंट नीड एनीथिंग एल्स। नोट्स वोट्स भी अभी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। Muskan is saying, I can't tell you how much I regret because I found you so late. Don't worry, we still have 10 days. So I'm there. It's okay. Okay. So, guys, that's so nice of you, Muskan. I'm so grateful. I need people like Muskan a little bit more. Chalo, joke apart. All right, guys, you do take care of yourself. I'll see you tomorrow. And Pranika has joined. Hi, Pranika. Hope you're doing well, dear. She's one of my old ones. Good, good, good. I'm keeping very well. Hope the same for you, dear. चलो गाइज, आई एम गोना एक्चुअली टेक अ लीव, ज़्यादा टाइम अभी बचा नहीं है। सब कुछ करेंगे, सब कुछ करेंगे। आई वांट मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टू जॉइन मी मोस्टली एवरी डे, एंड आई विल सी यू गाइज सुपर डुपर सून। कल ही मिलते हैं। बेल आइकन दबा लेना सो दैट आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं लाइव करूँ। लाइव कल 100% होगा। 10 दिन एग्जाम के रज के पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय।